Hello everyone, my name is Kiran Khemani. If you are new to the channel, so we are doing the MCQ series of economics. This is the part 2 of MCQ series. Part 1 is already posted. Go to the channel and watch the part 1 of economics MCQ series, mainly made for the term 1 examination. So if you guys haven't subscribed to the channel, then consider subscribing because I'm making videos on the important topics, even for the term 2 syllabus of yours. So yes, let's begin with the part 2 series. Before starting with the questions, let me tell you something about EduCircle. So EduCircle is an institute which is located in Nagpur, and we have these courses which are mentioned here. This is the phone number which is active even on WhatsApp. So you can let us know in case of anything. Fine. Now, let's see the question. Aggregate demand can be increased by, okay. So if you see this question properly, this question has come from money and banking. एग्रीगेट डिमांड मतलब जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों को. तो बेसिकली हमको क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, राइट? हमको क्या समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए in order to increase the aggregate demand. So what the RBI or government has to do, because monetary policies are made by RBI. बैंक रेट बढ़ाना चाहिए. देखो, बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब, बैंक रेट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक्स जो लोन लेती हैं आरबीआई से, उसका जो रेट उनको लगता है. तो फॉर एग्जांपल, इफ कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम आरबीआई और उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सो दे विल बी डिस्करेज टू टेक द लोन्स फ्रॉम आरबीआई. इन दिस केस मनी सप्लाई विल रिड्यूस, नॉट इंक्रीज ना. तो फिर ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही नहीं. Selling government securities by Reserve Bank. तो RBI if sells this government securities in the market, तो जैसे हमने देखा तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी अगर RBI, तो ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करेगी टू जनरल पब्लिक. तो सेल करने से क्या होगा, पीपल विल बाय, दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो द मनी will be blocked, right, in government securities, and this is how money supply will reduce from the economy and not increase. Next, increase in cash reserve ratio. If RBI increases cash reserve ratio, मतलब एक ऐसी लिमिट कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि आप अपने पास पैसा जमा करके रखो और लोन मत दो, ठीक है, उतना पैसा. तो अगर वो रेट या फिर वो रेशियो अगर बढ़ जाता है, so this will again reduce the money supply in the economy, not increase. So none of the above your answer. Next, BOP is an accounting statement that records monetary transaction between. Okay, this is quite an easy answer, easy question and easy answer. BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब एक ऐसा अकाउंट गवर्नमेंट जो बनाती है इन विच दे कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेसिडेंट्स ऑफ आवर नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, वो रिकॉर्ड होते हैं बीओपी में. ओके, नाउ if the trade deficit is rupees 1000 crore and the import of goods is 2000 crore, then the export of goods will be. So this question has come from BOP. ट्रेड डेफिसिट मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट है. बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करता है. तो सरप्लस तब होता है जब एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, ठीक है, एंड डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. तो इंपोर्ट हमको दिया है 2000 और दिया है 1000. फाइन. सो डेफिसिट, इफ यू राइट डाउन द फॉर्मूला, डेफिसिट मतलब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. आपको डेफिसिट का अमाउंट दिया हुआ है 1000, ठीक है, एंड इंपोर्ट है आपके कितने, 2000 crores. आपको फाइंड आउट करना है एक्सपोर्ट्स. सो टेक एक्सपोर्ट्स ऑन द LHS and your exports will come out to be 1000 crores, right? So option B is the correct answer. Now we are starting with Indian economic development. So
What was the life expectancy at the birth in India on the eve of independence? Eve of independence मतलब जिस time हम लोग independent हुए ही थे, ठीक है, तब बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम था, हेल्थ में एंड एजुकेशन में, सैनिटेशन में, इकोनॉमी में, हर चीज में प्रॉब्लम था. तो इट वाज वेरी लो टू फोर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज वर नॉट सो गुड. नेक्स्ट, when were railways introduced in India? Okay, a fact and a fact related question. Very important question. Railways were introduced in India in 1853 by the Britishers. The transportation system and even the infrastructure system was made quite good because to achieve two objectives. One was to make India the mere exporter of finished goods and to take all the raw materials from India to Britain. Okay, so ये सब पॉसिबल हो पाए और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग स्ट्रांग हो पाए, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, रेलवेज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी कुछ इम्प्रूव किया था. नाउ द टर्म HYVP, ठीक है, हाई yielding variety. तो HYV seeds we know. एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन. तो HYV सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी तो हमको पता है, तो जहां पे भी हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं है उसको आप काट दो. सो ऑप्शन डी विल नॉट बी योर आंसर, ऑप्शन बी विल ऑल्सो नॉट बी योर आंसर. तो HYV सीड्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि फार्मर्स ये अडॉप्ट करें और इससे क्या हो, हमारा प्रोडक्शन बढ़े. तो ये एक प्रोग्राम था, ये एक प्रोग्राम था which was inclined to make green revolution a success. So C is the answer. Now licensing policy aimed at, ठीक है, तो ये licensing policy का मतलब क्या होता है? Fine, so we need to understand this first. What is licensing policy? तो लाइसेंसिंग पॉलिसी को हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोल सकते हैं. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991. तो लाइसेंस राज समथिंग, लाइसेंस राज के अंदर people who had a particular license or had a particular permit, they could only grow in the industrial sector, and this was leading to a lot of discrimination, and hence this was scrapped on 24th of July 1991 by our finance minister Manmohan Singh. और इससे क्या हुआ, we got rid of the different monopolies and restrictive trade practices which were hampering the industrial growth back then. So the licensing policy, मतलब ये जो new industrial policy थी, which was aimed at what? Promoting regional equality, yes. To check undue expansion of industrial sector, yes. जो undue expansion हो रहा था particular sector में ही या फिर particular लोगों के लिए ही, उसको check करने के लिए बना था. So yes, both B, A and B is your answer. So option C is correct. Okay. Fine. So I hope this video was helpful. I'll be making more videos like these. So stay tuned and watch the previous and the next part and gear up for your examination. All the best. Let us know in case of anything. We would be really happy to help.